Am I audible, Dee? Yes. Yeah, yeah. Hi. Hi. Uh, Good morning. Evening. Evening, Dee. Where are you? I can't see you actually. So hence I've, it's a little. Oh. Yeah. office You've only. logged into the AC ID. I've switched on the video. It's just starting. It'll take a No minute or so. worries. Absolutely okay. So good evening, Dee, and good evening to all the participants who've joined us today for the group discussion on the changes that there is none other than Shivani, Dee, who will take us through the entire gamut of changes that has happened. Even though Shivani, I'm sure you don't need any introduction, at least in this part of the country, knows you and everyone is aware of you. As a formality, I'll just introduce uh, Shivani Shah is a chartered accountant by profession. She is India's first women athlete to get gold in Kettlebell Sports World Championship held at Uzbekistan in 2018. She is India's only two-time world champion in kettlebell sports, getting a second consecutive gold in Australia in 2019. She is also a TEDx speaker who delivered her maiden TEDx lecture in December 2021. Further, she is a fellow member of the ICAI who qualified in the year 2005. As an ex-PwC employee, she is currently she is in self-practice under Shivani Shah and Associates and specializes in indirect taxation. She is an erudite commentator. She has given lectures at various seminars, conferences, workshops relating to GST, service tax, and VAT. She is faculty for and is extensively associated with NACEN for training of CBSE officials. She regularly contributes articles on matters relating to taxes for various journals like Monthly Newsletter of AIRC, ICAI, Excise.times, and various websites. She is also the chairperson of the GST Indirect Tax Committee for ACA Kolkata for three consecutive years now, 2019, 2020, and 21. She is also a panel member of the Indirect Tax Committee for Bengal Chamber of a co-opted member of the Indirect Tax Committee for EIRC. She is an active member of Indirect Tax Study Group of EIRC ICAI, also a past and present co-chairperson for the Ladies Wing at ACAE. She was also the past co-opted member of the Women's Committee EIRC ICAI. I hand over the proceedings to you, the Ayush is also here, the chairman of the GT committee. Guys, just one request: make it interactive. I mean, make the best use of the speaker we have today. Thank you, Priyank. Yes, ma'am. Please. At the outset, I request all of you to kindly keep your audios on mute. Yeah, This is for the yeah. simple reason so that the entire discussion today, and mind my words, I say discussion and not deliberation, because unlike the other lecture meetings which we conduct at ACAE, this is a phenomenal platform that ACAE extends to each one of us to actually interact and discuss the issues on which the particular seminar has been um, decided. So just a small request. I request all of you to be on mute so that the background noise does not disturb each one of us. So the discussion for today is on the proposals which have been made as far as the indirect taxes are concerned. For me, my deliberation or the discussion would be limited only to the GST. And also, in the course of the discussion, I would be touching upon very briefly a few other amendments in GST which were proposed by the Finance Bill 2021 and which were made effective from the January 1st, 2022. As your chairperson of the committee mentioned, we wish to make this more interactive. So the flow of the discussion can be each time I take up a topic and I finish speaking on that particular topic with the permission of the co-chairperson Ayush, depending on how you maintain the sanity at a forum like this, probably you could allow people to get mute or just keep in your the chat boxes there where you can keep putting in your points, and maybe then we could discuss those points before I move on to the next point. Well, as far as GST is concerned, let me also at the outset just share my screen with you so that we're all on the same page. Ayush, I'll request you to kindly give me the sharing rights. Done the host, yeah.
Yeah, but हाँ अब मैं कर पा रही हूँ. So Yeah, right thank now. you for that. Share. Okay, so guys, my screen is visible, right? Yes, Deep. Okay, great. So as you can see on the screen, what I've done is jotted down a few important amendments as far as GST is concerned. These were some things which were top of my mind recall because there have been far too many changes. So when you talk about GST, one has a view that because the council is making changes each day almost, it's a very, very dynamic law. Unlike income tax, GST is a transaction based tax. So obviously, there is no dynamism. Likewise, even when we talk about the amendments, throughout the year, we have far too many amendments which have been brought in place. But this budget 2022 also has brought in many such changes. And when you read the fine prints of the budget, many things, umpteen number of things have been mentioned to as prescribed. So we have to wait for the rules to be floated out, the notifications, etc. Well, as far as the rates are concerned, there hasn't been any change on that front. But talking about the other changes, so the Finance Bill 22 clauses 99 to 117 take care of the changes which have been proposed. As far as the CGST Act is concerned, uh, clauses 118 to 120 is the IGST Act, and clauses 121 to 123 is the UTGST Act. Now, the first question that arises is, are these amendments in place? When will they come in place? I just mentioned to you that I would also be briefly touching upon a few amendments which were proposed by the last Finance Bill 2021, but which were made effective from the 1st of January 22. To my mind, even these particular amendments which have been proposed by the Finance Bill 2022 will take their own sweet time to be implemented. There is a lot of time because, as we all know, the bill will first receive, it has to go through the houses of the Rajya Sabha, Lok Sabha, the presidential assent, and then each particular state will have to amend their own legislations, and only then will these amendments come into place. By and large, a lot of these amendments, which you will be discussing right now, we will see is yet to be proposed. So the effective date, sorry, it is proposed yet to be notified. So none of these amendments, at least in the beginning part of my deliberation, you see, are the ones which have already been implemented. So let me tell you one more thing, friends. So I have not made this particular write-up based on the clause-wise. So we do not follow any chronology when it comes to the different clauses of the finance bill. So I have chosen to discuss the first topic, which is input tax credit, which obviously, as we all know, is a very significant part of the entire GST statute. And then we've picked up all those clauses in the finance bill which have anything and everything to do with ITC. So the chronology of the clause is not maintained in this particular write-up. And if you want, I will share this write-up with ACA post this. But we have followed it topic-wise. And the first topic that I would like to take up is input tax credit. So as you know, as you see on the screen, the first column talks about the clause of the finance bill, which talks about this particular amendment. Then we see whether this amendment has already come into place or not. Then we talk about which section of the GST Act is this clause giving an impact to, what is the amendment, and what is the impact. And that is one place where probably we could have a lot of discussions. So 99A1, what is the status? Effective date is yet to be notified. And what is the section? The section it's amending is the great, dear, very, very beautiful section 16 of the GST Act. So very quickly, friends, before I move into discussing this particular amendment, which has been proposed, very quickly on the chat box, could you tell me what are the 4 important conditions one needed to satisfy prior to the 1st of January 22 in order to avail input tax credit? I repeat, 4 conditions under section 16(2) जो आपको fulfill करना था in order to avail input tax credit. Very quickly on the chat box, please. कोई आप सब आंसर करेंगे because as I said, this is more of a discussion.
and not a deliberation. One-sided अपने इसको नहीं रखेंगे. So very quickly, any answers? I'll start with the first one, that you have to have a valid tax invoice or debit note. The second, देखिए सर मैडम जो भी है आप लोग, अगर आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे देन इट इज ईदर कि मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आ पा रहा है, और या तो मे बी आपको आंसर्स नहीं पता है. इन ईदर केस आई नीड यू टू एटलीस्ट keep interacting with me on the chat box. If any one of you feel it's important for you to unmute, please go ahead, unmute, because as I said, ये एक lecture meeting नहीं है, this is a group discussion. So anyone, can I see a raise of hands, anyone here? Yeah, and as they said, everyone has the right, they can unmute themselves. I mean, प्लीज, don't क्योंकि ये जीडी है, आप अनम्यूट करके बोलिए, सो दैट बस अनम्यूट में अपने डिस्कशन छोटा रखते हैं, सो दैट बाकी चीजों को भी हम कवर कर पाए. सो मूविंग अहेड, आई एम होपिंग कि अगली बार मुझे आंसर्स मिलेंगे इसमें, बट नॉनदलेस संदीप अगेन ही सेज receipt of goods or services. So when we talk about thank you, Sandeep, for joining in and sharing with us one condition. Anirudh says tax invoice hona chahiye. Number 2, services should be received. 3, supplier must pay the tax. And 4, supplier has filed the return. One small correction, Anirudh, यहाँ पे supplier की return की नहीं बात होती है, recipient की return की बात होती है. So yes, so ये 4 conditions हमारी को satisfy करने हैं, जहाँ पर बताया गया है कि भाई आपके पास वो इनवॉइस होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप एक क्रेडिट ले रहे हैं, नंबर 1. नंबर 2, वो बताते हैं कि आपने वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को रिसीव किया है. नंबर 3, आपने अपना रिटर्न फाइल किया है. एंड नंबर 4, जो आपका बंदा है, दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज पेड द टैक्स. नाउ 16(2)(a), और फिर आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर क्लॉज उन्होंने नया लाया था, 16(2)(a), which was proposed in the last budget 2021 and made effective from the 1st of Jan. अब उस कंडीशन में इन्होंने क्या बोला, उसमें इन्होंने सिंपल ये बोला कि 16(2)(a) के माध्यम से कि जिस इनवॉइस के बेसिस पे आपने क्रेडिट लिया है या आप लेना चाहते हैं, वह invoice has to be furnished by the supplier in the statement of outward supply, for the sake of brevity GSTR1, and the same has been communicated to the recipient under section 37. So ये आपका section बोल रहा था. इसमें जैसे मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा डिस्कशन कर रही हूँ इस पहले अमेंडमेंट का भी, because it has a very wide impact when we talk about ITC. Correspondingly, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के साथ उन्होंने रूल 36(4) को भी अमेंड किया. अब जब 36(4) को इन्होंने अमेंड किया, तो इन्होंने ब्रीफ में मैं बताती हूँ क्या बोला. दे सेड दैट कोई भी आईटीसी हम आपको नहीं देंगे अनलेस आपके सप्लायर ने उसको 1 में दिखाया हो, एंड उन्होंने सेकेंड कंडीशन रूल में ये बताया that it has been communicated to the registered person. माने आप जो रेसिपिएंट हैं, जो अवेल करना चाह रहे हैं, under form 2B as specified under rule 60 sub rule 7. अब ये में चीज में देखिए, what I'm trying to point out is that when they amended section 16(2) by adding the clause 16(2)(a) with effect from the 1st of January 2022, this was an amendment proposed in the last budget. तो सेक्शन में उन्होंने ये बात बताई है कि भाई हम आपको क्रेडिट दे देंगे अगर आपको कम्युनिकेट हो गया हो और सामने वाले ने अपना 1 भर दिया हो. और रूल में उन्होंने बोला है सामने वाले ने 1 भरा हो लेकिन वो आपको 2B में कम्युनिकेट कर रहा हो. तो आप देखिए यहाँ पर 36(4) में उन्होंने बोल दिया 2B में आना चाहिए, 2A से कोई मतलब नहीं है. वेराज जब उन्होंने 16(2)(a) की बात की, वहां पर उन्होंने कोई भी बातें नहीं करी हैं फॉर 2B. तो 16(2)(a) के अनुसार चाहे आपके 2A में आए या 2B में आए, आप क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन 36(4) रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि केवल हम 2B वाला देंगे. तो अगेन वो सारी बातें आ जाती है कि कैन द रूल्स ओवरराइड द एक्ट. तो आज इसमें एक लिटिगेशन कब आएगा? आप बोलेंगे मैम 2A हो या 2B है, क्या फर्क है? So as we all know that 2A is basically a dynamic document and 2B आपका static document है. तो जब हम लोग GSTR 1 फाइल करते हैं
से 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो आपका टू बी फ्रीज हो जाता है 13 तारीख को। तो जिस बंदे ने वन सपोज 14 तारीख को लगाया है, वो रेसिपिएंट के 2A में तो आ जाएगा, लेकिन रेसिपिएंट के 2B में नहीं आएगा। तो 16(2) के हिसाब से मैं वो क्रेडिट ले सकती हूँ, क्योंकि 3B के पहले मुझे वो दिख गया 2A में। लेकिन 36(4) बोल रहा है, दैट इज रूल 36(4) इज सेइंग सॉरी, आई विल नॉट अलाउ यू टू टेक द क्रेडिट because in the rule I've mentioned only the credit appearing in GSTR 2B. So obviously there is litigation for any assessee who's a little litigation averse, will obviously it makes sense कि आपके 2B में जो आया है आप उसी को लीजिए। And I'm not getting into that all historic thing कि भाई आपके 36(4) में पहली बार उन्होंने 16(2)A को 16(2)AA को अमेंड किया है, इसका मतलब ये है कि 36(4) का इसके पहले कोई अस्तित्व ही नहीं था। दैट इज 1/1/22 के पहले any particular litigation which has been initiated by the department on the ground that the particular ITC is not appearing in your 2A or 2B is absolutely unfounded and will not stand the test of time. But we are not getting into that right now. So my discussion was on 16(2)AA. अब हम लोग आते हैं कि ये 4 कंडीशंस अनिरुद्ध ने, संदीप जी ने शेयर किए, हम फिर एक 5th कंडीशन में आए, अब हम आते हैं एक 6th कंडीशन में। और 6th कंडीशन क्या है फ्रेंड्स? As proposed under the Finance Bill 22 under clause number 99A1, वो ये बोलते हैं that the details of ITC in respect of the said supply communicated to such registered person under section 38 has not been restricted. तो अब दो चीजें आ गई हैं कि भाई ITC तो आपके आ गया, लेकिन अब इसका हम लोग दो पार्ट करेंगे, one which is restricted, one which is not restricted. Not restricted तो आप आराम से अपना ले लीजिए, जो रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन में आएगा उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 38 में। अब ये सेक्शन 38 को इन्होंने कहाँ लगाया है? थ्रू क्लॉज 103 ऑफ द फाइनेंस बिल, जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों में इन्होंने बोला है कि हो सकता है भाई ये आपका आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड हो, 1 में आ गया हो, 2B में आ गया हो। तो पहले हम लोग जब आईटीसी था, हम लोग बोलते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। अब हो गया है, जैसे उस दिन हमारे एसी में नरेश सेठ जी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी चीज बोली, सीमिंगली लेस क्रेडिट हो गया ये। तो अब ये क्या हो गया है कि अपने बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर हैड सेड दैट आपका आईटीसी विल बी आईटी ओरिएंटेड। अब तो पता नहीं, क्योंकि आपके जीएसटीआर 2-3 कभी आया नहीं, लेकिन अब अपना ऐसा लग गया है कि भाई नो योर वेंडर, टिल एंड अनलेस यू वर्क विथ नोन वेंडर्स यू आर इन फॉर अ लॉट ऑफ ट्रबल। And obviously we all know that ITC is a substantive right of the assessee. वो सारी बातें करके फायदा नहीं है, but this is what the change is. तो अब आपके 1 में भी फाइल कर दिया, ठीक है, 2B में भी आ गया, 2A वाला डिस्कशन भी अपने अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी अब दो भाग हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एंड अनरिस्ट्रिक्टेड। सो इस केस में हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमारा रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट है या हमारा वो अनरिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट है। बिफोर आई ओपन द डिस्कशन विद द ऑडियंस, पहले अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपके 103 में इन्होंने क्या क्या बातें करी है। एंड माइंड यू फ्रेंड्स, जब जीएसटी का ढांचा बना था, वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी वर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग पार्टीज टू ड्राफ्टिंग द जीएसटी लॉ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट साइड। लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि भाई जीएसटी जो होगा आईटी डिपेंडेंट होगा, इट विल बी मच मोर क्लियरर। तो एक आपको ध्यान होगा कि जीएसटी में बीच में बातें आई थी कि रिटर्न्स पूरे चेंज हो जाएंगे, जीएसटीआर 2 होगा, जीएसटीआर 3 होगा, एक प्रत्येक इनवॉइस का लिंकिंग हो गया। नाउ दैट इज अ थिंग ऑफ द पास्ट, वो तो कभी होना ही नहीं है। सो नाउ दिस टू वे कम्युनिकेशन जो था कि भाई वेंडर मुझे बताएंगे, फिर मैं उनको बोलूंगा, अक्नॉलेज करूंगा, हाँ मुझे मिल गया। अब ये टू वे कम्युनिकेशन विल नेवर हैपन इन जीएसटी। अब ये एक तरफा ही है, आप उनके ऊपर निर्भर हैं कि वो कब अपना 1 फाइल करेंगे, 1 भी टाइमली फाइल करेंगे तब आपको उस महीने मिलेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में लीजिए। और वो भी क्यों? क्योंकि वो 16(2)AA। अब 16(2)BA में क्या बोल रहा है कि भैया हम आपको देंगे सब्जेक्ट टू ऑल दी अदर कंडीशंस। ये 6th कंडीशन ये बोलता है कि अब हम इसमें रिस्ट्रिक्टेड देखेंगे एंड नॉन रिस्ट्रिक्टेड देखेंगे। नॉन रिस्ट्रिक्टेड आप हमसे ले लीजिए, लेकिन जो रिस्ट्रिक्टेड वाला है वो क्या है वो आप देखिए आप। सो दिस इज अगेन सेक्शन 38 of the GST Act, and this is effective from a date to be notified proposed by clause number 103 of the Finance Bill 2022. एंड यहाँ पर ये क्या बोलते हैं दैट नंबर 1, जो भी आपका जीएसटीआर 1 फाइल करता है आपका वेंडर, इट हैज टू बी फाइल्ड इन द करेक्ट मैनर, और वो आपके 2B में आ जाएगा। अब 2B के दो पार्ट होंगे, एक हो गया आपका रिस्ट्रिक्टेड पार्ट एंड 1 बिकम्स योर अनरिस्ट्रिक्टेड पार्ट।
तीसरा, किस चीज को वो रिस्ट्रिक्टेड बोल रहे हैं या नॉट अवेलेबल हो सकता है। सबसे पहला एग्जांपल, मैं एक नई वेंडर हूँ, आई हैव बस वेरी रिसेंटली गॉट रजिस्टर्ड विद जीएसटी एंड मैंने एक अपने वेंडर क्लाइंट के साथ काम किया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन है से 10 तारीख का, अज्यूमिंग कि अमेंडमेंट आपका नोटिफाई हो गया है, आज की एग्जांपल अगर लें, और मैंने कोई उनको बिल छोड़ा और मेरा क्रेडिट था 1000 रुपए का, तो हो सकता है अब ये रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में चला जाए। क्यों? बिकॉज ये बोल रहे हैं कि एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसे मैंने अभी कहा, umpteen things have been left to prescribed by the गवर्नमेंट, बट यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि नए रजिस्ट्रेशन में हो सकता है कि हम आपको क्रेडिट अभी नहीं देंगे फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब वो टाइम पीरियड क्या होगा, ये रूल्स आने से ही हमें पता चलेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि नई रजिस्ट्रेशन के केस में पहले अपना होता था सेक्शन 18 में कि भाई अगर आप एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं विद इन 30 डेज, तब आपको पुराने 1 साल का आईटीसी मिल जाता था ऑन योर इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 18 आपका है। तो अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं आप क्रेडिट पास ऑन नहीं कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड रिस्ट्रिक्शन, सप्लायर हैज डिफॉल्टेड in the payment of tax and the default has continued for a prescribed period। अब ये 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी हो सकता है। तो आपने काम कर लिया, बंदे ने आपसे जो टैक्स लिया उसका पेमेंट कर दिया, लेकिन उसके टैक्स में कोई फर्क आ रहा है, देन ये बोल रहे हैं भैया अगर आपने टैक्स का पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया है, अब पेमेंट डिफॉल्ट कुछ भी हो सकता है 1 और 3B में, जैसे अगर आपका फर्क आ रहा है, जैसे आप थर्ड पॉइंट है, टैक्स पेड इन 3B इज लोअर देन द आउटपुट टैक्स शोन इन 1 बाय द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो मैंने 1 में 5 लाख दिखाया, 3B में मैंने 5000 दिखा दिया, 1 लाख, वो 1 जीरो मुझसे ज्यादा लग गया। तो सॉरी, ऐसा हो सकता है कि मेरे क्लाइंट्स को इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सफर करना पड़े, क्योंकि उस पर्टिकुलर पीरियड में मेरा डिफरेंस आ गया। अगेन एक और रिस्ट्रिक्शन, फोर्थ, इनवर्ड सप्लाई इज रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर हु हैज टेकन मोर आईटीसी इन 2B दैन इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। फिफ्थ, अगर आपने हायर प्रोपोर्शन इन टैक्स दे दिया है दैन इन योर ईसीएल। जैसे हम सब जानते हैं कि ईसीएल के केस में देयर आर स्पेसिफिक रूल्स जो बोलते हैं कि भाई अगर से फॉर एग्जांपल आपके 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट है और आपने पूरा आईटीसी यूज आप नहीं कर सकते, आप टू द ट्यून ऑफ 99% आईटीसी से कर सकते हैं, बाकी कैश से आपको करना होगा, एंड ओनली स्पेसिफाइड पीपल के लिए वो दिया हुआ है कि यू मे नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ दिस पर्टिकुलर रूल। वैसे इस पर्टिकुलर बजट में भी उन्होंने काफी रिस्ट्रिक्शंस प्रपोज किए ऑन द यूसेज ऑफ योर आईटीसी, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यदि उस रिस्ट्रिक्शन में आपके वेंडर फॉल करते हैं और उन्होंने उस रिस्ट्रिक्शन को डिफाई कर दिया है, देन इन दैट केस जितना आईटीसी वो पास ऑन करते हैं, although you have satisfied section 16(2)(a), AA, 16(2)(b), C and D, but because of BA ये आपके रिस्ट्रिक्टेड क्रेडिट में आ जाएगा and your credit will be restricted। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो नोटिफाई एनी अदर पर्सन जो उनको लगता है जिसको कारण आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट होगा। दिस इज जस्ट द एंटायर सेक्शन 38 एज इट इज। आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट बिकॉज हमने ऑलरेडी ऊपर उसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। ई क्रेडिट लूड, नो योर सप्लायर। अब I would like to ask my participants to maybe interact on the chat box, or if you want to unmute and go ahead, please. एंड कोई भी अपना ये मेंबरशिप नंबर अभी ना डालें, वो बाद में ऑफिस आपसे ले लेगी प्लीज। सो एनीवन हु वांट्स टू हैव एनी पर्टिकुलर डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक या एनी अदर व्यूज ऑन दिस, आई वुड लाइक टू नो प्लीज। सो प्लीज फील फ्री टू गो अहेड एंड अनम्यूट योरसेल्फ। Di, I have a question. So practically, when we are speaking, अपने actually में सारे clients का वो रेको करते हैं, and do we make sure that वो 2A या 2B का मतलब जिसका भी अपने credit ले रहे हैं, and we don't take more than that, even though we are in possession of the invoices and everything. If they've not filed the return, do we not take credit? See, I would say that prior to this particular amendment coming in place, which is 16(2)(a), to my mind and in my humble views, 36(4) did not have a parent. So it was pretty much an orphan rule. And we have numerous case laws which go on to say that the rules cannot override the substantive statutory provisions. So अगर आप 16(2) के सारे conditions को satisfy कर लेंगे
उसमें एक कंडीशन दिया है बंदे ने पेमेंट किया हो, बंदा माने आपके जो वेंडर हैं. अब हाउ ऑन अर्थ विल यू बी प्रिवी टू द फैक्ट वेदर से आयुष इज योर वेंडर, ही इज मेड द पेमेंट और नॉट? All you can do is to take an undertaking from him, or you can check the status on the GST website where it shows that Ayush Jain has filed his 3B. Beyond this, even if we go a step further and if he says that I've made under GST, we all know payment is also by way of credit. तो अगर इन्होंने वो क्रेडिट से 100% पेमेंट कर दिया हो, एंड से फॉर एग्जाम्पल द वेंडर इज सच हु हैज टेकन फेक क्रेडिट, तो आपने तो तभी भी 16(2) के सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए ना. नाउ कमिंग टू दिस अमेंडमेंट जो इन्होंने दिया है 2B and 1 का, सबसे पहले ये एक धारणा थी इवन अमंग्स द प्रोफेशनल्स कि भाई 2A में नहीं आया है तो मत लो. Although there was a significant chunk of chartered accountants and even practitioners who said that let's dispute this. My humble view has been clear that if the amount involved is small, then you see your cost of litigation. So rather you let go of that credit and take it at a later point in time, subject to the time limit prescribed under 16(4). But where the amount is big, and if you have otherwise satisfied 16 subsection 2, I see no reason that the credit should be blocked. And there have been numerous case laws, numerous judgments by the Honorable High Court to this extent. So I also know someone whose vendor was not paying up. So rather than paying the vendor, the client himself made the payment in the e-cash ledger of the vendor to prove that how much ever tax this gentleman owed me, I have put it in his e-cash ledger. So that is also a way out. But now, with this 16(2) AA coming into play, obviously they are very clear because they've made it a part of the mother section 16(2), wherein they are saying, dude, I need you to make sure he is filing his GSTR1 and he has to communicate to you. Now, although in 16(2) AA they talk about communication, which can be both 2A or 2B, but then the rule restricts the communication only to 2B. So obviously there'll be some timing difference because eventually अगर आपने 2A में डाला है और 2B थोड़ी दिन बाद आ ही जाएगा because of the timing difference. So there I feel now they'll have a lot of reasons to disallow your credit, but it also gives room for us professionals and also the assessees to know that because this amendment has been brought into force with effect from 1st of Jan, that means this proposal never existed prior to such period. So right from the inception of GST, which is 1/7/17 till the 31st of December, I'd say that 2A was immaterial for you. That's my humble view. Again, subject to each different case where the amount involved is big, where you can bear the cost of litigation. It only makes sense to dispute. If not, then you let go of your credit. Madam, I have a question. Can I ask you? Hanji. Yes, Parimal. So, Hanji, please. My client has paid the amount. Parimal ji, your voice is not clear. D. Sneha has a question in the chat box. Hello, Shivani. Yes. Section 41(2) as proposed to be amended includes reversal on account of non-payment. So why non-payment has been included again in 38(2)? See, that is something that even I was wondering. I really haven't got my answer to this yet. Because यहाँ पे उन्होंने जो 38(2) के restrictions डाले हैं, I think they are 6 in number, which includes your new registrants, जहाँ पे आपने excess अपना 2B ले लिया है, यहाँ जहाँ पे आपने default कर दिया, any other notified person, so on and so forth. So honestly, even I don't have an answer. If anyone from the audience can answer this, I'll also be enlightened on this. Or otherwise, let us come to the section and then maybe we can take it up. Sneha, you can unmute probably and just, if you have any more food for thought on this particular point, go ahead and unmute yourself. I was confused because I felt that it's anyways, they are putting it in 41(2). So then why again are they talking about non-payment in 38(2)? Also, one more question I had was that now what will happen to these judgments, DY, BTL and all, because we are used to quoting all this. So now can we use it? Because now, will those judgments also stand amended to that extent? Because now it has become a part of the act that payment has to be done. And right. Also giving you a tool to show that, the supplier has not made the payment. So you cannot say that I don't know whether he's made payment or not. So as long as I have fulfilled my thing, it doesn't matter. Can we say all those things? Madam, I had a
question. Can I continue that? I could not. Nirmal ji, let her answer Sneha ji's question, then we can take your question. Okay. We'll just come back to you in 30 seconds, sir. Sneha, you have a valid point about this repeat of that particular provision. अभी ये लोग ने जो restricted credit में बात की है section 38 में, वहां पर उन्होंने very specifically यहाँ पे बात किया that the supplier has defaulted in the payment of tax and the default has continued for a period as prescribed. Now, मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि पेमेंट का जब ये लोग बात करते हैं, पेमेंट कैन बी बाय कैश एंड पेमेंट कैन बी बाय क्रेडिट, obviously subject to the limitations that they prescribed as far as the e-credit ledger usage is concerned. Now, what about a case where the client has made the entire payment, including say 99% by credit, and the ITC through which he has made the payment is found to be ingenuine? Even then, will my credit be restricted under 38? Okay. नहीं, सबसे पहले तो ये जो कंडीशन उन्होंने दिया है पेमेंट का, क्यों दिया? क्योंकि वेरी फाउंडेशन ऑफ जीएसटी में इन्होंने वेरी क्लियरली बता दिया था दैट द ओनस ऑफ कंप्लायंस विल ऑलवेज बी ऑन द रिसीवर. सो कीपिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन माइंड, दे जस्ट, जिसको बोलता है ना हमारे लैंग्वेज में, ठूस दिया एक कंडीशन कि भाई पेमेंट होना चाहिए. Number one, today as a particular assessee under GST, I am not privy to the fact that where Sneha is my vendor, has she made the payment or not. All I know is that she has made the payment or not. मेरे को बस इतना ही पता है कि इन्होंने अपना 3B फाइल किया है कि नहीं. उसमें भी उन्होंने जिस टैक्स का पेमेंट किया है वो मेरा टैक्स है या आपने कुछ शुभम से लिया था या आपने कुछ आयुष से लिया था, उसका आपने पेमेंट किया है कि नहीं, उसका भी कोई मेरे पास, आई डोंट हैव एनी कैलकुलेशंस एंड आई विल नेवर बी प्रिवी टू सच. सो मेरे को तो अभी भी ये लोग जो नॉन पेमेंट के लिए लिख रहे हैं कि वो लोग आपका रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, आई फाइंड दिस वेरी वेरी आउटरेजियस, बिकॉज टू मी I need to know my vendor only to the extent of finding out whether the other conditions have been fulfilled by me or not. Now, coming to your question about the judgments of the High Court. Now, obviously, when the Honorable High Courts render their decisions, that is as per the then existing provisions of law. Once you see such a sweeping change in law, wherein to a large extent you see that the very aspect of law has undergone such a huge change, to my mind, obviously, those particular High Court judgments with those limited aspects will be rendered useless, if I may say so. Because यहाँ पर अब इन्होंने बोली दिया, unless you feel that even this provision will be further held to be ultra vires, कि भाई आप कैसे ये पूछ सकते हो कि मैंने पेमेंट किया है कि नहीं, and at least you give me some mechanism on the GST portal where I can find out whether my vendor has made the payment or not. To my knowledge, that is the only way out. Otherwise, as in GST, it's been happening, watch and wait. But ये जरूर है कि इसके पहले जितने litigations आए थे कि 2A में नहीं आया है और आप reversal करो, that to my mind absolutely has been rendered redundant. Because इसका मतलब ये है, इसके पहले कभी ये चीज का कोई था ही नहीं मतलब, because they have made it effective only with effect from the 1st of Jan. So that would make the case stronger. Yeah. Obviously, much stronger, and we are fighting lot of such cases. हमारा एक हाल फिलहाल केस हुआ है where the even अगर मैं 16BA को हटा दूं, 16(2)A, AA, B, C, D, I am satisfied all the conditions, but yet my credit has been blocked and department is telling me to reverse the credit. Why? I say that my vendor has made the payment and he's given me a written declaration. तो वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट आईटीसी से किया है और वो आईटीसी गलत है. अब ये लो, तो मैं क्या करूं सर, मेरा तो जो सेक्शन आप अलाउ तो करो. अब फिर हम लोग देखते हैं कि शो कॉज में यू कैन प्रूव दैट इट वाज अ केस ऑफ सर्कुलर ट्रेडिंग. Okay. So even while you see on the face of it that it appears easy, many cases you see, I mean, the law is yet to unfold. I can only say very, very bright days for GST practitioners ahead. And even on a personal level, I'm contemplating कि अब ये CA तो है ही, साथ में एक law degree भी ले लूं, क्योंकि the kind of litigations that will be moving to the High Court, it's really not a joke, because I don't know when the tribunal is coming into formation. Till then, rather than keeping all the hopes on the tribunal formation, we can all have good careers in the High Court.
So Parimal ji, आप कुछ पूछ रहे थे, please go ahead. वो क्या था, madam? My client had paid the GST amount. The supplier have not filed their returns or not paid the taxes. Now, can the department issue a show cause notice under section 74? I feel it should be under section 73. Am I correct? Sir, again, this will be subject to the facts of the case. In India, it never happens that you are not guilty. You know, you're always guilty unless proven otherwise. So the department will always follow that logic, even if you see with all the service tax audits which have been अभी जो हमारे चल रहे हैं 16-17 का एक पार्ट 17-18 का, so the period of limitation of 5 years applies only when the department can prove that actually there was no malified intention and anything and everything you do was with a bona fide intention. So actually the onus and the burden, they are two different things. So यहाँ पर हो गया है कि onus भी आपका है, burden भी आपका है to prove that you are operating with a bona fide intention. Yeah, now the only slight difference between 73 and 74 is that while one talks about a malified intention and the other talks about a bona fide. So if your supplier has not paid the tax, the department is assuming that you were privy to the entire transaction and you were aware कि वो payment नहीं कर रहा है, and accordingly उन्होंने 74 में आपका propose किया है show cause recovery. So this is all I can say, but obviously if you have any documents or any other correspondence with the department जिससे आप ये prove कर सकें कि आपने जो भी कुछ किया है was always done with a bona fide intention, and I think that you may have a strong case of asking them to recover, initiate proceedings only under 73 and not 74. See, I can give the details of the supplier's name, address, the check numbers, the tax invoice numbers. Will that be enough to prove my bona fideness? So this is absolutely a very subjective question. This is something that is very heavily dependent on the whims and fancies of your assessing officer. To my mind, and I would also like to take this opportunity to give a cue to all the participants who've joined in today. कई बार GST में भी when we do some things, we feel कि भाई let it be undercover. अभी मत बोलो डिपार्टमेंट को. जहां पे भी आपको डाउट हो, आप प्लीज लिखिए डिपार्टमेंट को. And 9 out of 10 cases they will never answer, but at least you will have a written correspondence कि देखिए हमने ये सर आपसे बात पूछी थी. Now, as far as your case is concerned, I would say that had you got any other correspondence wherein you are chasing the supplier or where, you know, any particular correspondence which can go to prove beyond doubt that आपने कुछ गलत नहीं किया है. But in this case, such is the law where the entire onus is on you. Oh, yes. So if you have to prove, and you can take cues from various high court case laws, various judicial pronouncements, which wherein they have taken a pretty lenient view, and especially when the law is new, the benefit of doubt is always given to the assessee that he was not expected to know this. So you will have numerous judgments which can go in your favor to help you establish that what you did was not with a malified intention. But never take it, I mean, department kya kar rahe hai na, take it with a pinch of salt, because unke liye you are always guilty unless not proven otherwise, and they will pass the burden and the onus on you to prove that you are not guilty, whereas it should work the other way around. Yeah. Thank you, ma'am. And plus, I would say that if your assessee has, his registration was valid when you were transacting with him, abhi bahut acha, because there are a couple of very nice judicial pronouncements. LGW Industries also in the Honorable Calcutta High Court has held that, see, when you were transacting with your assessee or with your vendor, at that given point in time, if the person was registered with the GST department, and his status as on the date of the transaction was as a registered assessee, the department has no rights to say that you transacted with a fraudulent assessee. If they can provide a registration to someone, how on earth are you not expected to work with a person then? Right. So that can also be a cue. Right. Plus, GST is a new law that can always work in your benefit, that it is expected that you are not aware of all the provisions of law. Thank you, madam. Thank you. Okay. So let's move on. Just 1 second. I'll just add on to this. So what happened with me was I had a GST audit 2017, 18, 18, 19, right? So there were about 5 or 6 suppliers who got their registrations cancelled post, 17, 18, 18, 19.
So say from 1/1/20, they got their registrations cancelled, right? That was by the department, huh? So either the voluntary, voluntarily they surrendered, or the department cancelled, whatever. I mean, from 1/1/20, they surrendered their GST registration. What the department did was they told me that, इनका effective date दिखा रहा है cancellation का, इनका these are not GST registered people. तो इनका जितना भी input है, we will reverse the entire thing. My amount was about 10-12 lakhs से वैसा कुछ था. So I had to go through the entire figure out कि भैया, इनका effective date of cancellation ये है, and then tell it the department कि when I was doing the transactions, that time they were registered. Subsequently, they have surrendered their registration. So the reversal of input tax, does not come into picture. It took a while. Exactly. So, right. So, वही चीजें है ना, and plus again, when they ask you to satisfy the condition of payment, at least now they have proposed to take out a functionality wherein they will restrict the credit automatically because the vendor has not paid. But tell me, before this functionality comes into play, what access do you have to whether the portal or any other mechanism provided by the statute or by the GST Council, wherein you can find out whether the supplier has made the payment or not? None. There is nothing. So how on earth do you expect me to, they have actually defied the doctrine of impossibility. And they continue doing that because under law, any lawyer would be in a better position to talk about the doctrine of impossibility. But when they make this law and when they continue making these amendments, they defy the doctrine of impossibility. Today, how on earth am I expected to know? All I can do is to find out the status of his 3B. And I can also take a declaration that he's paid the tax. Now, if the payment has been done through fraudulent ITC and you reverse my credit, well, that's an entire different story, but it is something that is not possible as on law for you to satisfy that particular condition under 16(2). Moving forward, again, clause 99A1, effective date is to be notified, and the section is 16(2)C. Now, 43A, now again, this is about the two-way communication. It was always there as a dead section. Now it is being done away with because as in how we see that the law is evolving, they are very clear, very, very clear that now we don't need a two-way communication. GSTR2, GSTR3 was never a part of the GST Act in terms of being implemented. It never will be. And accordingly, whatever reference they have in whichever section, it will stand deleted. Now, again, section 105, clause 105, effective date to be notified. What is the relevant section? Section is 41. Again, they revamped the entire section. Section 41 provided for provisional credit till the two-way matching of ITC was made. The two-way matching provisions have been removed. There will not be any requirement of providing provisional ITC. Availment in the ECL would now be considered as the final credit. Now, we all know that in the last budget, which was 2021, they proposed and that GSTR1, any particular liability that you show in GSTR1 will also be a self-assessed tax. Now, before this, it was understood that whatever you declare in your 3B is a self-assessed tax. Now, can anyone tell me that by just putting in the declaration of a liability under GSTR1 as a self-assessed tax, what difference will it make to the revenue officers? Anyone? Aap 3B mein do, 1 mein do. We've just been talking about some recovery proceedings. Any idea why they say that now, henceforth, with effect from the 1st of Jan, any liability that you declare in GSTR1 will be treated as a self-assessed tax? Any idea? Sneha, you should know. And probably because it's invoice level, so they want to keep that as fixed. So if there is any difference, they say that since you have already declared it, we will recover it and we don't need any proceedings against you. But they don't realize that we could make a mistake, clerical mistake in GSTR3. But I think a clarification was given to that effect that it won't be like, we won't just
raise a demand on you. If you have anything to say, you can put forth. Yeah, so what happens is that अगर आपका self assessed liability है और आपने अगर उसको payment नहीं किया है, then the department can recover that without initiating a show cause notice. So let me quickly take you to 7512 here. Section 75, what is this? Just one moment. Okay, so these are the, we just spoke about, Mr. Piramal ne abhi 73, 74 ki baat kari. For the interest of the audience, let me just quickly tell you what is 73 and 74. 74 talks about determination of taxes which are not paid, या आपने गलत ITC यूज कर लिया या आपने गलत रिफंड ले लिया, लेकिन वो सब आपने चीजें करी बिकॉज ऑफ फ्रॉड या आपके कोई बिल्कुल मिसस्टेटमेंट था या कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट था, और यही सारी चीजें आप करें लेकिन विदाउट एनी फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन, तब वो 73 में चला जाता है. वी विल नॉट गो इनटू मच डिटेल्स राइट नाउ. इसका इम्प्लीकेशन क्या है? डिपार्टमेंट गेट्स अ लार्जर टाइम पीरियड फॉर रिकवरी अंडर 74 विज़-अ-वी 73. अब हम लोग आते हैं 7512 में. व्हाट डज 75 टॉक अबाउट? 75 talks about general provisions relating to determination of tax. अब हम लोग चलते हैं explanation which is added to 7512. And this has been added, as you see, 94 अगर अपने देखेंगे 1 तारीख से इन्होंने ऐड किया है, wherein they say for the purposes of this section, the expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of details furnished in the outward supplies furnished under 37 but not included in the return under 39. And 12 में ये क्या बोल रहे हैं? That notwithstanding, non-obstant clause से शुरू होता है, notwithstanding anything contained in 73 or 74, which talks about issuance of a show cause notice for recovery, where any amount of self-assessed tax in accordance with the return furnished under the relevant section is unpaid, then along with interest payable, it shall be recovered under the provisions of 79. So they get other recovery provisions other than by way of issuing a show cause notice. So इसलिए अब ये बोलते हैं कि भैया 1 में भी आपने जितना भी कुछ दिया है उसको हम लोग self assessed मान लेंगे and we can move ahead in recovery proceedings without issuing a show cause notice. तो अभी वाजिब सी बात, अब जैसे ये 2-वे कम्युनिकेशन बंद हो गया है तो ये जो प्रोविजनल क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो भी अब रिडंडेंट हो गया है. अब प्रोविजनल क्रेडिट बोल के कुछ भी हमारे पास नहीं रहेगा, जो आपने ले लिया वही आपका क्रेडिट है. फर्दर यहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स के लिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं अलोंग विद द टैक्स व्हिच इज डिक्लेयर्ड बाय द और व्हिच हैज बीन कंप्यूटेड बाय द डिपार्टमेंट. एक चीज यहाँ पर और है, when the said payment is made by the supplier on a later date, the recipient, this will cover at a later point in time. जहां पर रिक्रेडिट की बात हो रही है, अभी हमने बोला कि भाई आपका क्रेडिट हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अगर आपके पर्टिकुलर वेंडर ने पेमेंट नहीं किया हो. तो मैंने उससे एक वेंडर से इनवॉइस लिया था इन द मंथ ऑफ से जनवरी 22, अज्यूमिंग ये अमेंडमेंट आ गया है, लेकिन मैंने बाकी कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए, बंदे ने पेमेंट नहीं किया. बाद में मुझे पता चला कि उसने फरवरी में जाके भी पेमेंट नहीं किया, मार्च में भी नहीं किया, अप्रैल में भी नहीं किया, जाकर उसने मई में किया. देन द लॉ सेज कि आप क्रेडिट दोबारा से ले लीजिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है. और इस केस में आपने जितना क्रेडिट जनवरी से ले लिया था और अभी आप मई में लेना चाहिए था, इस पीरियड का आप हमको इंटरेस्ट दे दीजिए. तो ये ऑब्वियसली एक असेसी के लिए कॉस्ट हो गया. ये बात और है कि अगर इस बंदे ने ये क्रेडिट जनवरी का सपोज दिसंबर तक भी नहीं किया था, तब क्या मुझे वो क्रेडिट मिलेगा? एनी आंसर्स? Although we'll discuss this provision later on, my query is that I satisfied all the conditions under 16(2), barring one, that the assessee did not make the payment of tax, the vendor. The invoices say dated January of a particular year, and later on I found out that the payment has been made by my vendor only in the month of December of the following financial year. Will I still be eligible for the credit or no? Any answers? As far as my limited knowledge goes, I don't think we'll be eligible because it is according to the annual return filing, right? Mm-hmm. So we can only claim any ITC of a previous year in the annual return. And once we have filed the annual return, then we'll not be able to claim any credit. नहीं, assuming आयुष हमने annual return नहीं फाइल किया 31st तक, बंदे ने मुझे दे दिया था
या आपका सिंपल और एग्जांपल सिंपल कर देते हैं, ये 2 करोड़ के नीचे का असेसी है, तो एनुअल रिटर्न का इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे एग्जांपल में हमने दिसंबर ले लिया, तो तो एनुअल अर्लियर द कट ऑफ डेट वाज 30th सितंबर, अभी उन्होंने शायद अमेंडमेंट करके इसको 30th नवंबर कर दिया है। सो हाँ, लेकिन मेरे को 30th के बाद आ रहा है ये। So I don't think we can take the credit. Chalo, then we'll leave the answer till we come to that particular provision. So we'll park the query here and then we'll tell you how. अभी ये सब आप मत पढ़िएगा जो मैंने लिखा है, otherwise we'll lose the essence. Parimal ji, I request you to kindly mute yourself. Oh, sorry. Extremely sorry. No issue. No problem, sir. Now chat box में 30th September, जयप्रकाश जी बोल रहे हैं 30th September, ठीक है सर, just keep your answer एक बार के लिए parked, we'll come back to it when जब हम लोग ये वाली चीजों को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं 99B, which is 16.4. 16.4 is amended to read that a registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the 30th day of November following the end of the financial year to which such invoice or debit note pertains, or furnishing of the annual return, whichever is earlier. पहले हम लोग सब जानते हैं कि अंडर सेक्शन 16.4 हमारा दिया हुआ था कि कोई भी पर्टिकुलर पीरियड का अगर आपको आईटीसी लेना है, for any reason you forgot to take the ITC, you skipped the ITC, or maybe you short took the ITC, they say no problem, let the financial year get over. If you discover that you've short taken an ITC at that point in time, which is prior to the due date of filing the return for the period of September of the following financial year, please go ahead and take the credit. However, if you miss the bus, then we will not allow you to take the credit. The sad part about the law is that there is no two-way communication. There is no matching of ITC. Today, if I take an ITC of 30 lakhs in my GSTR 3B, there is no way that the department can understand before the audit whether this ITC I've taken from Sneha, whether I've taken it from Ayush, whether I've taken it from Priyank, whether I've taken it from Sandeep, or whether I've taken it from Mr. Piramal. Kyunki maine to le liya hai. So without getting into the fact that actually this entire section of restricting the ITC to a time frame can easily be manipulated by any assessee who's got a fair knowledge of how to deal with GST issues. However, I would say that the law prescribes that till the due date of filing the return for the month of September of the following financial year, they allow you. After that, they say the ITC is dead and gone, you will not be able to take the credit. Now they say that the law, at least I would say this is one welcome change. First of all, सबसे पहले तो ये query आती है कि ये जो लोग restrict कर रहे हैं, whether at all this is, as per law, or whether even this provision in itself is ultra vires. But without getting into the aspect of whether it is a lawful provision or not, such was the law. अब इन्होंने इसको extend कर दिया है, तो भैया आप इसको 30th of November तक ले सकते हैं. So FCM ITC और RCM दो टाइप के ITC हम लोग लेते हैं. तो अगर आपको कोई भी ITC अपना पुराना लेना है जो आप भूल गए हैं, सो उस फाइनेंशियल ईयर के बाद का आपको 30th नवंबर तक का टाइम मिला है. सो व्हाट इज द 30th नवंबर तक का टाइम? तो ऑब्वियसली आप ITC कैसे अवेल करते हैं अपने GST रिटर्न्स में? 1 से तो करते नहीं है, आप 3B से करते हैं. दैट मीन्स आपको अक्टूबर का जो रिटर्न फाइल करते हैं आप 20-24 नवंबर तक, उसके अंदर अंदर आपको ले लेना है. और अगर आपने अक्टूबर का स्किप कर दिया रिटर्न, माने आप अक्टूबर तक पहुंचे ही नहीं है और आपकी रिटर्न की गाड़ी अभी तक से अगस्त में अटकी हुई है, तब भैया आप 30th नवंबर के अंदर अंदर अपना रिको कर लो. सो देयर मे बी सम असेसीज की जिनके रिटर्न्स अभी पेंडिंग चल रहे हैं, वो भी अब ज्यादा दिन तक ये हिसाब किताब नहीं चलेगा. लॉ में हमने देखा, उन्होंने बताया है कि कुछ पीरियड से ज्यादा अगर आपके रिटर्न्स पेंडिंग रहे, 6 महीने का टाइम पीरियड था, अब उन्होंने प्रपोज किया है कि भाई अगर आपके रिटर्न्स उससे कम टाइम से भी एज प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड तक अगर आपने नहीं फाइल किए, देन द डिपार्टमेंट कैन गो अहेड एंड cancel your registration. So gone are those days, because now the department wants you to be more and more tax compliant and more return compliant. तो अब वो भी नहीं है कि 6 महीने तक आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, बिकॉज अब 6 महीने से कम का भी टाइम पीरियड रहेगा, दे कैन इजिली कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ से रेगुलर टैक्स पेयर. और अगर आप कोई भी QRMP स्कीम को ले लो, देन तो और भी कम, अगर 3 महीनों का भी आपने नहीं फाइल किया तो वो आपका कैंसिल कर सकते हैं.
सो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई है जो रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा है, तो भाई अक्टूबर का रिटर्न हम लोग जनरली 20 तारीख तक लगाते हैं. 3B इज द ओनली मैकेनिज्म बाय वे ऑफ विच यू अवेल योर ITC. तो ये बोल रहे हैं कि आप 30th के अंदर अंदर इसको ले लेना. और अगर आपकी गाड़ी 30th ये अक्टूबर तक नहीं आई है, तो 30th नवंबर अगर आप पहुंच गए हो, तो जो भी 3B फाइल कर रहे हो, अपने पुराने साल के ITC का रिको उस पर्टिकुलर मंथ में कर लो. डोंट वेट कि अक्टूबर का रिटर्न का ड्यू डेट था 30th. विच एवर रिटर्न यू आर फाइलिंग, आपको 30th नवंबर के अंदर अंदर उस क्रेडिट को अपने ले लेना है. फेलिंग विच वो आपका क्रेडिट लॉस हो जाएगा. But if it is not, September. But if it is not appearing in the 2B September, September, obviously subject to section 16(2). Okay. 16(2) का तो है ही. I mean everything is subject to section 16(2). So effectively for QRMP scheme filers, the effective date is still 30th September, because QRMP का अक्टूबर का रिटर्न तो as it is will be filing in the month of January. So even if the GST appears in the month of October in the 2B, we are not able to utilize it because our return is only due in the month of January, and there is no mechanism. But this I'm talking about, Ayush, the past period. Okay. तो फिर आपको ये अपने ITC की बात कर रहे हैं for the past financial year, right, जो आप लेना चाह रहे हो इस financial year के नवंबर तक. Right. तो अकॉर्डिंगली आपके लिए जो रिटर्न, हमारे लिए रेगुलर टैक्स पेयर का जो रिटर्न रहता है अक्टूबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, जो कि हम 20 या 24 तक भरते हैं, QRMP के लिए वो अकॉर्डिंगली और प्रीवियस पीरियड का रिटर्न हो जाएगा, जहां पे दे हैव टू डू द एंटायर रिको एक्सरसाइज. नाउ मूविंग अहेड, अपने आते हैं यहाँ पर सेक्शन 37(1), 2 and 3 of the CGST Act, which has been 1 second before that, let me just see. Okay, any other queries until now, friends? Queries kya? Any point of discussion, anyone facing any issues with the department for their clients or themselves, as far as whatever discussions we've had until now? Please feel free to unmute yourself and be a part of the discussion. So Shivani, I would want to ask something, that earlier it was due date of September. So like people were closing their books on September, so they could, reconcile and everything. Now they have extended it. So they should at least cover the people whose books and everything gets closed in November. So shouldn't they have made a due date of November rather than taking it 30th November? It makes any sense only. See, हमारे साथ वही बात है स्नेहा, that beggars aren't choosers. जो मिल गया उसी से आप खुश रहो. पहले तक तो ये लोग बोल रहे थे कि हम 20 और अक्टूबर तक आपको दे रहे हैं. अब ये बोल रहे हैं कि हमने 30 नवंबर कर दिया है. तो they say that हमने ample time आपको दे दिया. I particularly feel that there is no point in restricting the credit to a time period. Why? Because it's my credit. Why are you restricting my period? See, once you avail the credit, there is no time limit for utilizing it, right? Section 16(2), 16(4), they all 17(5), they all talk about availment of credit. Right. So if I have been allowed to utilize it whichever way I want to, only the restriction is on the availment. तब तो हम ऐसा ही करते हैं कि सारी जितने क्रेडिट्स हैं हम सारा अवेल करके रख लेते हैं. और अब तो हमको ये भी एक इंटरेस्ट में अमेंडमेंट प्रपोज हो गया है, विच विल बी वेरी सून, जहां पर अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है और आपने केवल अवेल करके क्रेडिट को रखा है, देन यू विल नॉट बी लायबल टू पे एनी इंटरेस्ट. सो यू आर वेरी राइट इन व्हाट यू से. आई वुड से दैट व्हाई एट ऑल इवन रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट. So hence मेरा first point यही था कि 16(4) in itself, is it intra wires? I mean उसी में सबसे बड़ा question है. But एक बार without getting into that, आज के दिन उन्होंने 30th नवंबर किया, but extending your logic थोड़ा सा और आगे कर देते तो it had been easier for people who actually closed their books, as you say, on the 30th. Yeah, tell me. Yeah, so I think it would create a little bit of more confusion, because people would think कि हाँ 30th तक time है, तो the person who's filing GSTR 1 would make all the changes by 30th. But my due date of 3B is 20th December. So I would have already have filed, right? So this 30th, I think, is creating more confusion rather than solving. हाँ, I agree. Very valid point.
Sneha, आप just repeat your point. I think that's a very important point, and then maybe if anyone else has to say. So Sneha has to say that ये जो 30th November का है, that is creating more confusion, and she has a point. Sneha, go ahead. Why do you think कि confusion होगा? Yeah, so when I am filing my October GSTR 1, what I will do is that instead of filing it on 11th November, I will say कि चलो मैं अपना corrections वगैरह सब 30th November तक कर दूंगी. फिर I make all the corrections by 30th November and आराम से I file because thinking कि I have time till 30th. But the purchaser, that person will suffer because उनका जो अक्टूबर का ड्यू डेट है 3B का वो 20th है of November और फिर उनकी 20th December है जब वो ले नहीं पाएंगे. So then, you know, I feel that, you know, because... So Sneha, can you, she has a very, very good point, but thoda sa मैं audience को clarity देती हूँ. So यहाँ पर Sneha is saying that जो इन्होंने GSTR 1 में भी एक amendment ले आया, propose किया है कि भाई अब आप GSTR 1 को भी rectify कर सकते हैं. उस चीज को आप highlight कर रहे हो यहाँ पे Sneha, right? Yeah, so मुझे लगता है because there are different due dates for 1 and 3B, there should be different due dates with regards to amendment also. Like 1 के लिए it should be different and 3B के लिए it should be different. Perfect. So यहाँ पर हम लोग अभी जो 16.4 में बात कर रहे हैं friends, we are talking about the restriction which has been given in the law as far as availment of your ITC is concerned. पहले था आपका say the due date of return filing for the month of September of the following financial year, उसको इन्होंने अभी थोड़ा सा आगे करके 30th November कर दिया. Here Sneha is also talking about another aspect कि जहाँ पे आप अपने GSTR 1 को 30th तक अगर अमेंड कर पाएंगे, उसका जो रेपरकशन होगा वो आपके पर्टिकुलर क्लाइंट को उसके अक्टूबर के रिटर्न तक नहीं मिलेगा या वो 30th नवंबर तक नहीं मिलेगा, वो उसके लिए ट्रांसफायर होके जाएगा दिसंबर तक. सो व्हाइल यू आर अमेंडिंग इट एज पर लॉ थिंकिंग कि आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है 30th नवंबर तक का, द इफेक्टिव बेनिफिट विल नॉट बी पास्ड ऑन टू द असेसी. सो हेंस योर ड्यू डेट्स शुड बी डिफरेंट फॉर योर 3B and your 1. Very important point, which we'll also talk about once we go on to that particular proposal of rectification of GSTR 1, which is abhi yahan pe let's go to the next one, which is clause 102. And what are the sections? 37 of the CGST Act. Conditions and restrictions prescribed for furnishing the details of outward supply and communication. Two-way हम लोग सब जानते हैं, अब कुछ नहीं रहेगा. So hence the government proposes to remove 42, 43 and proviso to 37, 1 and 2, which provided for a two-way communication, and the time limit for the error of omission has been now proposed to be extended till 30th of November. So this is what Sneha was talking about, कि जहां पे आपने 1 को अमेंड करने का, या नॉट अमेंड इज नॉट द राइट टर्म एक्चुअली, रेक्टिफाई करने का टाइम लिमिट आपने बढ़ा दिया. कहां तक बढ़ा दिया? आपने उसको बढ़ा दिया है 30th नवंबर को. सो सपोज स्नेहा इज माय क्लाइंट एंड आई एम हर वेंडर. मैंने एक बिल स्नेहा के ऊपर छोड़ा और मेरे स्टाफ से गलती हो गई 1 में उसे दिखाने का. So then I told my staff, he said अभी तो 30th नवंबर तक टाइम है मेरे पास. तो मैं बोली ठीक है, let's gather all the faults and एक बार में हम लोग इसको 30th तक करेंगे. तो वो जो बेनिफिट है वो स्नेहा के 2B में कब दिख के आएगा? बाय द टाइम वो स्नेहा के 2B में आएगा, उसका टाइम लिमिट फॉर टेकिंग क्रेडिट चला गया होगा. दिस इज व्हाट शी इज एक्चुअली वांटिंग टू से. एम आई राइट स्नेहा? Yes, exactly. And hence the due dates of 1 and 3B, ये जो 30th November दिया है, should have been different. Point well taken. Moving ahead, अपने आ रहे हैं अब 102D clause. The relevant section is 37.4. So यहाँ पर अब अपने ITC related के बाद now we are gradually moving to the return related amendments. So ITC हमने discuss किया. Now we are actually to the return related amendments. 4 में क्या बोल रहा है? That it is proposed to be provided in the Act that one cannot furnish a return for a succeeding period if the return for any of the previous tax periods
is not filed, subject to कि कुछ categories में ये लोग allow कर सकते हैं. Let's take down the other amendment and then we'll discuss it in toto. Again, ये एक आपके non-resident का है. I'm just skipping this, please. 104B. Again, आपके QRMP scheme taxpayers का दिया हुआ है. I'm not getting into this. ये आपका दिया हुआ है effective date to be notified. Section 39(9), the last date for rectification of any error or omission of any financial year has been provided as the due date of filing the September. Same चीज है, अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं that is the 20th, the date has been modified. तो similarly जो अभी स्नेहा ने बोला, आपके लिए भी जब 30th नवंबर है और सामने वाले ने 1 भी 30th नवंबर में किया है, that will create a dichotomy. And ठीक है, अब अपने आते हैं ये चीज I wanted to bring down your attention to 104D, which is section 39(10). 3B for a particular period would not be allowed if GSTR 1 for that tax period has not been filed. By notification, the government may allow certain taxpayers to continue filing the return. वो obviously अब जैसे वो prescribe करते हैं उसके ऊपर निर्भर करेगा. So आपने देखा होगा that जब यूनियन बजट आपका 2021 आया था, even then they had proposed certain changes and वहां पर उन्होंने ये बातें बोली थी कि भाई अगर आप, और ये आपके precisely जनवरी ऑफ 2022 से इम्प्लीमेंट हुआ है, जहां पर उन्होंने रूल 59(6) को अमेंड किया था और बोला था कि भाई अगर आपने अपने 3B को नहीं फाइल किया है एक पर्टिकुलर पीरियड का, तब हम 1 भी आपको फाइल नहीं करने देंगे. Again, in the amendments which were implemented from 1/1/22, they very briskly spoke about कि अगर आपने GSTR 1 में एक liability declare करी है और 3B में एक liability declare करी है, then क्योंकि 1 आपका self-assessed tax हो गया है by virtue of the amendment, recovery can be initiated under 75(12). तो इन्होंने 1/1/2022 से ये ला दिया था चेंज 59(6) में, if I'm right, कि भाई अगर आपने एक पीरियड का 3B फाइल नहीं किया है तब हम आपको 1 भी फाइल नहीं करने देंगे. एंड वाजिब सी बात है कि भाई आप 1 फाइल करके क्रेडिट पास ऑन किए जा रहे हैं और आप टैक्स का यहाँ पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम आपको आपका रिटर्न फाइल नहीं करने देंगे. और अब उन्होंने बोल दिया है कि 3B for a particular period would not be allowed if 1 for the tax period has not been furnished. So basically it's all interlinking your 3B and your 1. Considering 2, 3 तो अब आने से रहा, तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई 1 और 3B को एकदम मैचिंग करके और हम लोग को लाइन बाय लाइन साथ लेकर उन दोनों को चलना है. So this is, yeah, so budget 2021 rule 59(6) reads that if 3B for a preceding period is not filed, then 1 will not be allowed. अब उन्होंने एक और स्टेप आगे चल के बोल दिया है कि अगर 1 नहीं फाइल किया तो 3B नहीं देंगे. फर्दर अगर आपके मिसमैच है, रिकवरी प्रोसीडिंग्स वो इनिशिएट कर सकते हैं. सो बेसिकली ऑल इन ऑल दे आर सेइंग दैट प्लीज मेक श्योर योर 1 and your 3B is hand in hand. Now another provision 49(2) and 49(4) को इन्होंने प्रपोज किया है अमेंड करना, wherein they prescribe restrictions for utilizing the amount available in the electronic credit ledger. And आपको सब पता होगा, let's quickly go to 86A and 86B. So what does 86A and B say? They prescribe certain limitations as far as your credit utilization is concerned. तो जैसे अपने थोड़ी देर पहले मैंने 86B की बात की थी, जहां पे वो बोलते हैं कि अगर आपके ECL में 100 रुपए पड़े हुए हैं एंड इफ यू डू नॉट फॉल अंडर द रिस्ट्रिक्शंस, बाय एंड लार्ज ये बहुत कम लोगों को रूल अप्लाई करता है, बट अज्यूमिंग आपके ऊपर अप्लाई करे तो आप केवल 99% of your ECL you can use to make the payment of your tax liability. You cannot use the balance 1%. Likewise, they also have certain restrictions which have been prescribed under Rule 86A. Now, by virtue of this particular amendment, which is proposed in your section 49(4) and 49(2), they again propose to add certain restrictions in terms of how you can utilize your electronic credit ledger. Now, अभी तक हमने जितने भी restrictions देखे हैं, say for example 17(5) block credit की बात करें, 16(2) के what are the conditions for availment of credit,
यहाँ पर 16.4 जहाँ पे वो लोग टाइम रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, we have just spoken about the restrictions on availment. There were these teeny meeny rules wherein they had proposed earlier, and they were by and large not very strict, because बहुत कम लोग उस rules में fall करते थे when we talk about say for example आपका 89B. बट अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब हम आपका रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, तो हमारे हिसाब से आप क्रेडिट को यूज करेंगे. So this obviously has not gone down very well with lot of taxpayers, members from our fraternity, because when something is yours, it is like restricting someone to use the money in the wallet. तो जैसे आपने अपने ई कैश लेजर में डाला पैसा, आप उसको केवल जीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं. अगर आपको लगा कि एक्सेस डाल दिया, आप रिफंड क्लेम कर लीजिए. बट जो आईटीसी है, अब उसमें भी आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि मैं किन चीजों पे इसको यूज कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ. ये तो हमें रिस्ट्रिक्शंस पता ही थे कि आई अगेंस्ट आई, CNS को आप यूज नहीं कर सकते हैं. बट नाउ दे गॉन अ स्टेप फर्दर टू से कि वी विल प्रपोज फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ आईटीसी. ऑब्वियसली कंसिडरिंग कि इतने फेक इनवॉइसिंग और इतनी सर्कुलर ट्रेडिंग का काम हो रहा है, बोल के दे आर ब्रिंगिंग इन दीज रिस्ट्रिक्शंस टू मेक द assessee more and more return compliant, tax compliant. But the sad part is that many good assessees who otherwise have no malignant intentions are also having to face the brunt. 109C आपका effective section 4910 section amended to allow the amount available in electronic cash ledger. This is a welcome move under the CGST of a registered person to the electronic cash ledger under the act or IGST of a distinct person. That means यदि आपके एक ही पैन है और आपके various GSTIN है, अगर कहीं आपका एक electronic cash ledger में है, you can transfer that amount to a distinct person, and जहां से आप transfer करोगे, that will be treated as a refund for that particular person. So कई बार लोगों के जहां cash ledgers में है और किसी और registration में उनको उस पैसे की दरकार है, now with this proposed amendment in 4910, they can feel free to transfer the money from one cash ledger to the other. Mind you, cash की बात हुई है, credit की नहीं. Moving ahead, अपना है यहाँ पर 49.2 and 4 prescribes restrictions under the electronic credit ledger. This we've already discussed. Section on the interest. Now, this is something which is obviously was a welcome move. For the longest time, I think we have been harping कि 18% लगना चाहिए, 24 का कोई interest का rate ही नहीं है. So now they have gone on to say with the retrospective application, which is with effect from the 1st of July 2017, by virtue of amending section 50 subsection 3, that where any ITC has been wrongly availed and utilized, please mind the word and, the registered person shall pay interest on such ITC wrongly availed and utilized at such rate not exceeding 24%, as may be notified by the government on the recommendation, and the interest shall be calculated. So 53 provides that the interest, अब सबसे इसमें important बात क्या है कि आपने कोई ITC को avail कर लिया, but you are not sure whether this is eligible ITC or not. You're not sure about the fact कि ITC आपको मिलना चाहिए कि नहीं, लेकिन आपने तभी भी कर लिया. आप क्यों करोगे? क्योंकि 16.4 का कंडीशन आपके ऊपर आ गया. कई बार ऐसा होता है that assessee is, by the time he is sure of the nature of the input tax credit, whether it forms a part of 17.5 or not, उसको लगता है मेरी बस मिस हो जाएगी, because वो जो ड्यू डेट का चक्कर इन्होंने दिया है, the due date for filing the return for the month of September of the following financial year, वो अपना पार हो जाएगा. So hence ये लोग बोलते हैं कि चलो अवेल करके रख लेते हैं and then we will not utilize it. तो पहले एक ये शंका थी कि भाई उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट लगना चाहिए. Now it is clarified कि उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा. Department is asking you to pay the interest only in a scenario where you are wrongly availing it and utilizing it. Now let me give you a real life example. कई बार ऐसा होता है, we all know under section 17.5 credit is restricted under various sections. अब एक particular section जहाँ पे आपका credit restricted है, that as we all know is construction related ITC का. So यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई
कोई भी आपके कंस्ट्रक्शन का इनपुट हो या इनपुट सर्विसेज हो, अगर वो कंस्ट्रक्शन नेचर का हो, कंस्ट्रक्शन माने इट्स अ वेरी वाइड गैमेट ऑफ एक्टिविटीज. Construction includes modification, repair, renovation, alteration, blah, 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 a host of activities to the extent capitalized. इसको हम construction बोलेंगे. और अगर आपके इस नेचर का कोई भी ITC है, तब वो आपका ब्लॉक्ड होगा, irrespectively कि आपने उसको बिजनेस पर्पस में यूज किया. So, say for example, today if I am making my office और मुझे एक छोटे से रूम का केवल टाइल्स लगवाना है, if my prudent accounting policies allow me to book that as a revenue expenditure, then from the GST perspective, they will not have a problem, although it is construction, but because it is not capitalized. But कुछ भी चीज हो जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो और हमने उसको कैपिटलाइज कर दिया है, obviously when we talk about construction, it has to be in relation to immovable property, तब वहां पे वो लोग रिस्ट्रिक्शन डालते हैं. सो कई ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अपनी सीमेंट है, सैंड है, बालू है, मिट्टी है, बहुत सारी चीजों को लाते हैं, बट एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट दे आर नॉट श्योर कि क्या पोर्शन मेरे सिविल के खर्चे में जाएगा और क्या पोर्शन मेरे प्लांट एंड मशीनरी के फाउंडेशन वर्क में जाएगा. Because 17.5 has an explicit provision which says that if any of these particular items, whether of goods or services, are used for the foundation work of your plant and machinery, then in that case, the credit will not be blocked. So these companies expend a huge amount of money. Now, at the time of paying the money to the vendor, essentially from when their time limit starts, they have no idea whether it will be going as a civil nature work or whether it will be going in my plant and machinery. So if as a prudent assessee, he does not avail the ITC thinking that let me understand, but he may miss the bus by section 16.4. So for them, it is a very noble cause that now you can simply avail the ITC and not utilize it. And later on, once you're sure, आप उसको reverse कर दो, तो the department will not take any interest from you. But इसमें एक problem आती है, because you know, a lot of times, the law proposes certain changes and the law makes certain changes, but which are not in sync with the portal. Now, assume the scenario where a particular assessee has ITC in his books, which he is not very sure of whether it is an eligible ITC or not. But the time limit is passing by, so he says, I will avail it. So he avails the ITC. But because he is not sure and because he does not want the burden of interest on him, he says, I will not utilize it. Because if he utilizes it and later he finds out that the ITC was ineligible, unnecessarily he'll be subjected to an interest. So in this case, what does he say? He says that what we will do, that we will not utilize the ITC. Now imagine if such an assessee has an output tax in that tax period under CGST and SGST, example. And this ITC in question is IGST. He also has CGST ITC and SGST ITC. Any one of you who is filing returns under GST, can you please tell me whether the portal will allow him to bypass the IGST ITC and use the C against C and balance maybe in cash? Whether will he be allowed to do so, or whether mandatorily he will have to use the ITC of IGST? Any answers? I think he has to mandatorily use the IGST first, because in that order it has to be exhausted. It has to be because those are the restrictions which the law prescribes in terms of using the ITC. Right. What goes off against what goes off first, etc., etc. So the deal is that while the law is telling me that I will not charge any interest provided you don't utilize it, but where the ITC is in the nature of IGST, your portal is not allowing me to not utilize it. So what will I do? Any idea? Because I don't want to bear the burden of the interest. So what will I do? Any idea? What should I do in such scenario? Anyone? So I will, as a prudent assessee, what will I do? Because I don't want to get the burden of the the interest, I will say that I will simply reverse the ITC. Fine.
So this is a real life example we are dealing with and very, very relevant to the section that we are discussing. So what I did was I would reverse my ITC because I have availed the ITC and in the next month I will reverse the ITC. Now, by the time I get clarity that out of that 100 rupees of IGST ITC, 40 was eligible and 60 was not eligible. But I have already reversed the entire 100 rupees. Why? Because I did not want to bear the brunt of interest under 50 subsection 3. So what do? Is I re-avail the ITC to the extent of rupees 40. Am I clear? I re-avail the ITC. But by the time I re-avail the ITC, the due date under 16.4 has elapsed. So I am now re-availing the ITC only in the month of, say, January of the following financial year. Now my question to you is, friends, will I be still allowed to re-avail the credit, or will the restriction of 16 subsection 4 apply? Because September wala due date nikal gaya hai. Any answers? I will repeat. मैं एक बार repeat करती हूँ for the interest of everyone, and I want कि थोड़ा सा आप सुन के please participate करें. Saikat, Anirban, all of you all are there. थोड़ा अपना अपना आंसर दीजिए. We can all be wrong because GDs में हम सब सीखने के लिए आते हैं. So इसलिए मैंने ये थोड़ी देर बाद ऐसा लगना चाहिए कि सब कुछ कुछ सीख के गए हैं. इंटरेस्ट बोलता है आपको कि हम अगर आप अवेल करते हैं और यूटिलाइज नहीं करते हैं तब हम आपको इंटरेस्ट आपसे नहीं लेंगे. ठीक है, तो मेरे को जब इंटरेस्ट लेना है एट द टाइम ऑफ अवेलमेंट, आई एम अनश्योर ऑफ द नेचर ऑफ आईटीसी, but at the same time I realize that if I don't avail it now, the law under 16.4 will not allow me to avail it. It's the first time availing the ITC. I avail the ITC, and this ITC in the nature of IGST. But as I said, this 100 rupees of ITC, I'm not sure whether it is eligible or not. So I do not wish to utilize it, but the portal is not allowing me not to utilize it. There is an outward liability of say rupees 500 in CGST, and I don't have the credit of CGST example. So the portal is mandating it that no, you first use this 100 rupees. To my humble knowledge, the portal will definitely mandate you to do this. But the minute I do that, I am unnecessarily facing the brunt of interest. So what I do, I just simply reverse the credit for once because I don't wish to use it now, and I pay my CGST liability in cash. Now, going forward, my question is, by the January of the following financial year, I get some clarity that yes, this ITC actually was an eligible ITC to the tune of rupees 40. So what I do, to the tune of rupees 40, I take it, and to the tune of rupees 60, I just let it go. Now, my question is whether I can re-avail this particular rupees 40 by the January of the following financial year, or will the provisions of 16.4 apply on me? That is my question, and I need an answer. So, Shivani, for re-availment, there is no time limit in the entire act or anywhere in the rules. Right. In fact, we could also use this to our advantage for the 30th November one. 30th November due date. So because I'm filing 3B on 20th October, if it's not reflecting by the supplier, I will take it and reverse it. And then in case in his October GSTR1, he makes changes and it's getting reflected in December, I will re-avail it. Exactly. So यहाँ पर हमें जहाँ पे भी लगता है कि because you want to not bear the brunt of the interest and you also want to meet the deadlines of 16.4, remember friends, कि 16.4 talks about the restrictions of the first time availment of ITC. But whenever we talk about the re-credit of ITC, इसलिए यहाँ पर भी जब हमने ऊपर वाले एक provisions discuss किए थे, wherein they have mentioned that if the supplier has not paid the tax, you will not be eligible to get the ITC. Mind you, आपने ITC लेके रख लिया था, बाद में आपके restricted ITC में आया because of the fact that the vendor has not paid. So वो आप recredit जब लेंगे एक बार reverse करके, उसमें भी 16.4 का time limit आपके लिए apply नहीं करेगा.
So this reavailment will not be subject to section 16(4). So as far as the major amendments concerned under GST, हमारे तरफ से तो इतना ही था. I would like to now, engage in any further discussions or any other points which the participants would like to talk about, or if anyone has anything to say in respect of the deliberations that we've had until now. Dee, I have a question. So, हाँ जी. तो एक केस है, ठीक है, wherein a company has let out property, ठीक है, उसको they are supposed to get rent every month, okay, but there was some dispute between the directors, ठीक है, जिसके वजह से they did not raise the rent bill for 15 months. ठीक है. Now अब बीच में वो कोविड वेवर और वो सब, चलो ठीक है, अभी 1st January को what they've done is they've raised the bill for the last 15 months. ठीक है. Right. Is it allowed या is there anything else that needs to be done? I mean, क्योंकि जैसे अपने रेंट का होता है ना, अप्रूवल होता है every 7th या 5th या whatever is written in the agreement, वो उसी दिन ड्यू हो जाता है. ठीक है. तो whether the department can come and say कि भैया आप 15 महीना जो नहीं दियो मेरे को पैसा, उसका इंटरेस्ट भी दो every month का कैलकुलेट करके, या if I raise it for 15 months together on say 1st of January, it is fine and the department will not come to me and say anything. Okay. See, my view is very simple, that this will, whenever we talk about, say, a rental agreement of this sort, anything in excess of 6 months, I think that is the time period for a continuous supply of service. So when you see the tax invoice rules, they are very clear that the invoice needs to be raised as per the prescribed guidelines under the agreement. That is one. तो अगर आपने, ये बड़ा अनहर्ड ऑफ है कि आप 9 महीने का रेंट जाके से 9 महीने के अंत में लोगे. So if you go to the regular schedule, जहाँ पे invoice की बात आई है, they are very clear that the tax invoice has to be raised within 30 days of the rendition of service or receipt of payment, whichever is earlier. So आपके लिए due date आपका रहेगा 30 days from the date of, say, completion of service. So for any rental for a particular month, we take tax period as say 1 month. So suppose आपने जून का दिया है, तो you should ideally raise the invoice by the 30th of July. But अगर आपके agreement में on the contrary लिखा हुआ है, जो most agreements में लिखा हुआ रहता है कि 10th of the following month में आपको invoice raise करना है, then your due date becomes 10th. Ultimately आप 10th जुलाई को करो या 30th जुलाई को करो, GST में वो tax period जुलाई का ही आएगा. The due date will only be the following month of August. So ideally that will not have any implication of interest at all. लेकिन it is absurd that आप 9 महीने का एक साथ करेंगे. So the department will be well within its right to demand tax from you on a periodic basis. ऐसा हो सकता है कि आप 3 महीने का रेंट एक साथ करो. So if you qualify as a continuous supply of service, then as per the rules they write as which is prescribed under the agreement. तो agreement में आपने 3 महीने का लिखा है अगर, to that extent I think the agreement can come to your rescue, not otherwise. The problem here was that there was some issue between the directors in terms of कि कितना रुपया rent raise करना है या something of that sort, but that will not be of any help, right? Even if I to my knowledge, no, I don't think so, because you see the law is very clear, and internal disputes, it's as good as saying that I don't have money in my bank account, so I'll not pay GST right now. So by mutual trust and agreement, you cannot shift the onus of liability to anyone else. Likewise, because of an internal conflict between the stakeholders, the revenue will not stand to lose any tax collection. So I don't think so really you have much of a case there. Okay. Thank you. Unless obviously if they intend to put penalty, etc., there obviously you will have a very valid case. But as far as your payment of interest is concerned, I don't really see. But then again, there is a viewpoint now, there is no interest on interest. So keep on litigating. Madam, one thing is, as you are also aware, that on redemption of securities, 1% of the value will be considered as exempt supply. Yes. For which we have to reverse the ITC and all that. Yes. To declare the exempt supply, we have to mandatorily state the HSN code. No, where are you talking about? GSTR 1, is it? Yes. Now there,
for exempt supply. No, so I'll tell you. You have borrowed that get your question. of Income Tax Act, just one person. Now, what should I do there? So when you go through the provisions of the reversal under the prescribed section of the GST Act, they are very clear that this is being treated exempt only for the purposes of reversal of ITC and not from perspective of treating it as an outward supply. Right. So hence, whenever you are doing your reversal at the end of the financial year, or if you're doing it on a monthly basis, you don't have to show it anywhere in your GSTR1. All you need to do is to reverse your credit through your GSTR3B. They are very clear that this reversal of 1% of the sale value of security under, I think the relevant section is 17 or 18, read with Rule 42 or 43. Right. There in that case, it is only for the reversal of ITC, and it has absolutely no place in anywhere in your GSTR1. Anywhere, neither in GST 9 also. 9. No. Nowhere in your table number 4, nowhere in your table number 5. It is only in your GSTR table number 7 that you need to show it. In GSTR 9. Yes, table 7. Thank you. The GSTR 2B, okay. So my employee was saying that he had come across a case जहाँ पे it shows that 14th को एक invoice वो हुआ है and it is reflecting in both 2A and 2B. Whether that is correct, that is possible, that is not possible. To my mind, 2B में तो नहीं आना चाहिए because 2B is your static document that gets frozen and beyond the date वो कोई data उसमें लेगा नहीं. That is the primary difference between your 2A and your 2B. That 2A will have a dynamic status, whereas 2B will be a static one. But as long as it's showing in the 2B, just feel free to go ahead and take it, yeah. Okay, as long as वहाँ पे दिख रहा है. Because 2B नहीं तो 13th तक खत्म हो जाना चाहिए ना, 11th and 13th. Absolutely. 11th को आप 1 फाइल किए, 13th फ्रीज हो गया, तो जो भी बंदे ने 1 उसके बाद फाइल किया है वो 2A में आएगा आपका. And this is exactly the point I was saying, that 16(2)AA talks about कि भाई आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपके पास वो दिखना चाहिए. There they are not saying 2A या 2B में, लेकिन 36(4) में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि रूल 67 में that means only मेरे 2B में. तो इंटेंट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑल्सो अभी आप देख रहे हो जो भी ऑटो पॉपुलेट होके डेटा आता है वो 2B से आता है. सो द इंटेंट ऑफ द डिपार्टमेंट इज क्लियर कि मुझे 2B का ही आपको ITC देना है. And obviously, if you're someone who's averse to litigation, it makes sense that you make your 2B as your sacrosanct document and go ahead and taking credit. Okay. Any other questions? I'm sure GST is not that simple. किसी के पास कोई question नहीं. Participant. Madam Sanjay Patwari, how are you? Yes, sir. मैं अच्छी हूँ सर, थैंक यू सो मच. मैडम एक चीज बताइए, ये जो 1% सिक्योरिटीज का रिवर्सल करना ITC का, इट विल रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस ओनली? नहीं सर, दिस हैज नथिंग टू डू विद एक्सपेंस. मैं आपको एक बार फट से रूल दिखा देती हूँ. इट विल बी इजियर फॉर यू. जस्ट बिफोर यू शो द रूल, सपोज हाँ जी, द मेन बिजनेस ऑफ ए फर्म इज ट्रेडिंग इन गुड्स. So 95% the turnover is of purchase and sales of goods. Small amount is of trading in security. They invest in securities, so purchase and sale is there. So 1% reversal of will be of total ITC or only of expenses for that month? नहीं सर, एक बार आप वापस बताइए, क्योंकि ये जो हम लोग जिस पर्टिकुलर रूल के तहत इस रिवर्सल को करते हैं, दैट इज इन रिलेशन टू आपके रूल नंबर 45. सॉरी 45 तो आपके नहीं, 45 हाँ उसी का ही आपका पार्ट आता है 45 में, जहाँ पे ये लोग बोलते हैं that the value of security shall be taken as 1% of the sale value of such security. जो explanation आपका आया है, right. और वहां पर exactly, तो आपने इसमें परचेज और एक्सपेंस से आपका कुछ नहीं है. जो भी आपका सेल वैल्यू है सर सिक्योरिटी का, उसका आपको 1% रिवर्सल करना पड़ेगा. 1% exempt supply कंसीडर होगा ना मैडम? प्रोपोर्शनेट होगा ना? exempt supply का रिवर्सल मैं आपको बता रही हूँ. I'll give you an example.
सो सबसे पहले अपने क्या चीज डिस्कस करें, अपने डिस्कस कर रहे हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई के तहत आपका जितना आईटीसी आता है उसका रिवर्सल। सो वो जो आप रिवर्सल करेंगे वो किस चीज का करेंगे, पहले उसका आप अपने समझते हैं। वो चीज होगी जो भी हमारे कॉमन आईटीसी है, बिकॉज एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ जो भी आपका डायरेक्टली इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल सप्लाई है वो यू विल गेट 100%। जो आपके डायरेक्टली रिलेटेड टू एन एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। एंड जो भी बचा हुआ है, जो से फॉर एग्जांपल इन लेमन लैंग्वेज में बोल सकती हूँ, टेलीफोन हो गया, मे बी मेरा लैपटॉप होगा, या मेरे एक्स्ट्रा जो कुछ आई कैन नॉट एलोकेट वेदर इट्स अ टैक्सेबल सप्लाई और एन एग्जेम्प्ट सप्लाई, उसको मैं ले लेती हूँ अपने कॉमन में। अब कॉमन का मेरा आईटीसी का पूल खड़ा हो गया कि ठीक है भाई, आउट ऑफ द टोटल आईटीसी ऑफ 1000 rupees I have bifurcated 300 for taxable, so that is out. I have bifurcated 300 for exempt, that is out, and I'm left with a balance of rupees 400. So this 400 becomes the pool of my common ITC. Right. Now when I do the formula of my total turnover, my exempt turnover divided by my total turnover. Yes. So as Mr. Piramal rightly pointed out, that what do I consider as my exempt turnover? That as per the explanation to Rule 45 reads, the value of security shall be taken as 1% of the sale value of such security. Right. So जो आपका value of security का sale value आया है उसका 1% becomes your numerator. So right. 400 multiplied by that divided by my total turnover will give me the total amount of ITC I need to reverse. Right. Madam, second one small thing in return, when somebody may make sales and there is sales return, so the net value comes in table 31A of the GSTR 3. सर टेबल वाइज मत मेरे को पूछेगा क्योंकि मैंने आज तक एक सिंगल रिटर्न नहीं फाइल किया है सर। आप मेरे को लॉ पॉइंट पे क्वेरी पूछिएगा, टेबल के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल भी उसमें वो नहीं बता पाऊंगी, स्पेशली इन योर GSTR 1s and 3B। आप क्वेरी पूछिए, मे बी anyone else who's dealing with returns here can help you out. I will put it other way, like suppose I purchase any goods and there is a purchase return also, so in GSTR 3B I should show the net figure or the return should be shown as reversal of ITC. चलिए ठीक है, anyone who's dealing with, मैं क्या करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी, but anyone else who's dealing with returns here, ऑनिर्बान आप हैं, बताइए आप लोग क्या करते हैं? कोई भी अगर ITC आपका रिवर्सल होता है, सॉरी आपने कोई ITC लेके रखा है परचेज पे एंड बाद में उसका रिटर्न हो गया थ्रू अ क्रेडिट नोट, वेयर आर यू शोइंग दिस? फिर से एक बार रिपीट कीजिए। मैंने एक आइटम परचेज किया है और मैंने ITC ले लिया, बाद में वेंडर ने मुझे क्रेडिट नोट दिया है, तो वो ITC सर पूछ रहे हैं कहाँ पे दिखाना चाहिए? Where will that ITC go? नेट ITC दिखाएंगे या रिवर्सल में दिखाएंगे? रिवर्सल में दिखाएंगे। 4B में, टेबल 4B आई थिंक। हाँ, टेबल 4B में। ठीक है, दैट मीन्स सर हम लोग नेट नहीं दिखाते, हम लोग उसको रिवर्सल में दिखाएंगे। नाउ प्रैक्टिकली ऑल्सो इसमें एक प्रॉब्लम आता है GSTR 9 में, जब हम लोग 2A के साथ रिको करते हैं ITC का, उसमें भी इसमें एक दुविधा आएगी आपके। ऑनिर्बान, वुड यू लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट? हाँ बताइए, 2A से जब रिको अपने 9 में करते हैं तब आपका क्या प्रॉब्लम आएगा? कंसिडरिंग कि हम लोग ये ITC का क्रेडिट नोट रिवर्सल में दिखाते हैं, तो व्हाट प्रॉब्लम विल इट शो इन योर GSTR 9? वहां पे प्रॉब्लम यही आएगा आपका टेबल 6 में, जो टेबल 6A में जो डेटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है वो आपका ग्रॉस ITC का फिगर आता है, वहां पे रिवर्सल का फिगर आता नहीं। जब पोर्टल में GST 9 का टेबल 8A के साथ 6B का कंपैरिजन होता है, तब वहां पे क्रेडिट नोट वहां पे रिफ्लेक्शन होता नहीं, वहां पे एक डिफरेंस आपका टेबल D में, टेबल 8D के में आ जाता है। ये प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है। टेबल 7 का जो रिवर्सल 9 में, am I correct? यस सर। नहीं सर, नॉट टेबल 7 की रिवर्सल की यहाँ नहीं बात हो रही है। अपने जब टेबल नंबर 6A ऑफ GSTR 9 में ऑटो पॉपुलेट होके एक ITC का फिगर आता है,
अनिर्बान, ये फिगर जो अपने 6A में आता है, ये क्या क्रेडिट नोट को माइनस करके आता है या ग्रॉस आता है? बिफोर क्रेडिट नोट रिवर्सल। टेबल 4A का 3B का ऑटो पॉपुलेट होता है, am I correct? Right. That is before reversal, right? अब ये वाला फिगर आपके टेबल नंबर 8A से ये लोग कंपेयर करते हैं। Am I right? 8A net of figure, net figure. नहीं सर, 8A में नेट ऑफ होके आपका नहीं आ रहा, 8A में नेट ऑफ होके आ रहा है, लेकिन जो आपने अभी टेबल नंबर 6A से टाना है वो नेट ऑफ होके नहीं आ रहा है। हाँ, 6A is gross, 8A is net. Exactly. Now whatever reversal, जो अभी आपका क्वेश्चन था सर, हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया because I think to this extent there has been some clarification by the department कि जितना आपका क्रेडिट नोट का ITC है उसको आप रिवर्सल में दिखाइए। तो वो रिवर्सल हम लोग का ऑटो पॉपुलेट होके GSTR 9 में नहीं आता है। वो कोई बात नहीं, आप हाथ से टेबल 7 में बैठा देते हैं, as Mr. Parimal said. Right. But now when you are comparing a net figure of ITC with a gross figure of ITC, there is a difference in the GSTR 2A, where obviously subject to the other conditions remaining same, your GSTR 2A will be lower. Right. And obviously that anything where there is a difference, obviously they provide you a mechanism of providing a reconciliation and uploading that. But otherwise you can be rest assured that's paving way for a show cause notice. But I would also like to add that with all these changes which have been implemented with effect from the 1st of January 22, wherein they have categorically amended Rule 36(4) and added 16(2)AA to, for the first time ever in the history of GST since its inception, to give a color and form and a valid backing to an otherwise orphan rule, which was 36(4). Prior to such date, to my mind, any difference between 2A and your ITC availed should not be paving way for recovery by the department. This is my humble submission. Okay, the final point, madam. Suppose to Mr. Anirban also, suppose if we in GSTR 3B, if we show net figure in table 4A5, will there be any problem? सर देखिए, टू दिस एक्सटेंट द डिपार्टमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट आप वहां पे दिखाइए, बल्कि उल्टा मैं बोलूंगी अगर आप नेट दिखाएंगे तो आपके लिए बल्कि GSTR 9 के पर्सपेक्टिव से सही रहेगा। अदरवाइज टू माय माइंड इट विल नॉट रियली, ऑपरेशनल इश्यूज आपको कुछ नहीं आएंगे इफ यू शो इट इन योर GSTR 3B एज अ नेट फिगर, to my mind. But इसमें खाली but वही जब हम लोग ये रिटर्न, बट आपके अकाउंट से जब आप रिकंसाइल करेंगे सर, राइट, तब आपको एक दिक्कत आएगी, बिकॉज वहां पर आप इनवॉइस के बेसिस पे ले रखे हैं, फिर आपने CN के बेसिस पे उसको रिवर्स किया है, सो देयर इज अ 1-to-1 मैपिंग विच अदरवाइज इन 3B जहां पे आप एक साथ डेटा को डालते हैं विदाउट लिंकिंग इट विद इनवॉइस, एंड नाउ स्पेशली ये 2-वे कम्युनिकेशन ना कभी था और अब आना भी नहीं है, then to prove it to the department may become a task. I think to that extent you may have a problem. और एक होता है जब हम लोग 3B में कोई भी फिगर या रिवर्सल का फिगर यदि हम हटा के उसको 4A5 में नेट करते हैं, देन यू नो वो रेड कलर आ जाता है कि यू हैव रिवर्सल को आपने नहीं लिया है, दैट आल्सो राइट। सर रेड से तो कोई घबरा के फायदा नहीं है, बिकॉज यू नो हमने देखा है, बिकॉज यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू डोंट क्वेश्चन द अथॉरिटीज, we don't question their jurisdiction, we don't question their powers to initiate certain recovery proceedings, we don't initiate, हमारे तरफ से हम जब घबरा जाते हैं ना, तब वो लोग समझते हैं कि भाई वो जो कर रहे हैं वो सही है, और आगे चल के जब आप उनको रेफ्यूट करना चाहते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लॉस्ट बैटल। तो रेड हो, ग्रीन हो, पर्पल हो, पिंक हो, मैं तो ये बोलती हूँ और हर सेशन में मैं यही बोलती हूँ कि अगर आप अपने स्टैंड को विंडिकेट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड आगे सालों में, then that is the right thing to do, and irrespective of the fact whether वो लाल काला पीला जो भी हो, because it is immaterial, and also have it in you to actually you know ask questions to the department, because more than often when we give in to them, then उनको ये लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो actually सही कर रहे हैं, and बाद में जब आप उसको dispute करना चाहते हैं, then you've lost all grounds to do that. So right at the beginning जब initiate होती है proceedings, उसी समय अपने को करनी चाहिए. Since we have 10 minutes, I'll quickly go through some of the changes which were brought in with effect from the budget of last year and implemented
with effect from the 1st of January. सबसे पहला बोलना चाहूंगी द ग्रेट जजमेंट ऑफ द कैलकाटा क्लब बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट, जहां पे उन्होंने बोल दिया था सर्विस टैक्स नहीं लगना है. I'll just take 10 minutes because we have a little less than 15 minutes. So very quickly I'll go through these amendments. These are the amendments which have been implemented in the GST law with effect from the 1st of January 22. Nothing to do with this year's budget, but mostly to do with last year's budget. तो कैलकाटा क्लब का जजमेंट था, टू दिस एक्सटेंट द लॉ हैज बीन अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली टू से इन शॉर्ट कि भाई अब क्लब और मेंबर्स के बीच में आपको जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे क्लब मेंबर को दे या मेंबर क्लब को दे. सो बेसिकली द इंटायर दे हैव ट्राइड टू आउटडू द डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी, और अब इन्होंने बोल दिया है. और हाउ व्हाट हैव दे डन, दे हैव अमेंडेड सेक्शन 7(1) by adding section 7(1) में एक एक्सप्लेनेशन. उस एक्सप्लेनेशन के तहत दे क्रिएटेड अ डीमिंग फिक्शन. और डीमिंग फिक्शन क्या बोलता है कि भैया कोई भी ऐसा आदमी पर्सन हो जो कि अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विस दे रहा हो, तब ये मेंबर्स और ये क्लब अलग अलग माने जाएंगे और इनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम लोग सप्लाई मानेंगे. और इसमें इन्होंने ये बोल दिया है कि रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट होगा, दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/17. सो जो भी क्लब्स नहीं दे रहे हैं ऑब्वियसली उनको देना पड़ेगा. इंटरेस्ट की बात आती है तो एक आपके बहुत अच्छा बढ़िया जजमेंट है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि भाई जहां पे आपने जीएसटी पहले कोई टैक्स पेमेंट नहीं किया था, पहले डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स था, तो किन केसेस में आपके इंटरेस्ट नहीं लगेगा. So this will come to rescue of lot of these clubs who have otherwise not paid GST. ITC को लेकर हमने already 16(2)AA पे चर्चा कर ली है. रिकवरी ऑफ टैक्सेस पे वी हैव ऑलरेडी स्पोकन कि अब इन्होंने सेक्शन 75(12) में एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दिया है, जहाँ पे सेल्फ असेस टैक्स में अब GSTR1 की भी लाइबिलिटी आ जाएगी. इनफैक्ट आपके ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ऑल्सो इन द केस ऑफ कबीर रियलिटी बहुत क्लियरली पहले ही बोल दिया था कि भाई आप जो भी अपना GSTR1 में डिक्लेयर कर रहे हैं उसको हम आपका सेल्फ असेस टैक्स मानेंगे. सो इसलिए अब बहुत केयरफुल हम लोग को रह के अपना GSTR1 फाइल करना होगा. इट्स जस्ट नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड लायबिलिटी. मैचिंग अपने को करनी पड़ेगी. जहां पे आपसे कोई क्लरिकल एरर हो गई है, आप अदर देन रेक्टिफाइंग इट और इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल पीरियड, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप लिखित डिपार्टमेंट को जवाब दे दीजिए ताकि आपका बोनाफाइड प्रूव हो सके और आपके वन के बेसिस में जिस बंदे ने क्रेडिट लेना है उसके लिए भी लाइफ इज ईजियर. प्रोविजनल अटैचमेंट के लिए इन्होंने सेक्शन 83 में काफी चेंजेस करी हैं. पहले था कि भाई अगर आपकी कोई भी पेंडेंसी है तब हम लोग आपका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं. तो अगर कोई पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग नहीं है तब हम लोग प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं आपका करेंगे. इनफैक्ट एक ऐसा केस था जहां पे समन्स के केस में अंडर सेक्शन 70 GST में समन्स इशू होते हैं, उसके केस में इन्होंने प्रोविजनल अटैचमेंट इनिशिएट किया था. सो द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट इन द केस ऑफ काय शिम्पेक्स हेल्ड कि भाई इसके केस में आप प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये समन की केस है और आपके बहुत लिमिटेड सेक्शंस थे जिसमें 83 का एप्लीकेशन था. लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है भैया पेंडेंसी और नो पेंडेंसी अगर हमने इनिशिएट कर दी है एनी रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर चैप्टर 12, 14 और 15, तब हम लोग आपका प्रोविजनल अटैचमेंट कर सकते हैं. सो इन अदर वर्ड्स अब इनके पास बहुत लंबे पावर्स आ गए हैं, चाहे असेसमेंट रिलेटेड हो, इंस्पेक्शन हो, सर्च हो, सीजर हो, अरेस्ट हो, समन हो, डिमांड हो, रिकवरी हो, सबके केस में अगर इन्होंने इनिशिएट कर दी है प्रोसीडिंग्स तब आपका प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है. और पहले ये काफी रिस्ट्रिक्टेड एप्लीकेशन था. नाउ दे हैव इंक्रीज द स्कोप ऑफ दिस. सो ऑब्वियसली मेनी पावर्स गिवन टू द डिपार्टमेंट. एक कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन था आपका सेक्शन 151, जहां पे उन्होंने पूरा इसको चेंज कर दिया और बोला है कि कोई भी कमिश्नर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी बंदे से जीएसटी मैटर में एक असेसी के बारे में कुछ भी डिटेल्स ले सकता है. इसमें अगेन उनके लिए बहुत पावर्स आ गए हैं. ऐसा नहीं है कि उनको रिस्ट्रिक्टेड वेज में आपका करना पड़ेगा. इंटरेस्ट की बातें हम कर ही लिए हैं. ऑब्वियसली सेक्शन 35, 5 और 44 में एक चेंज था विच डिड नॉट गो डाउन वेल विथ मेनी असेसीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि भाई अब आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन करना है और ये अब ऑडिट बोल के कुछ नहीं है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है और ना तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की दरकार है ना कॉस्ट अकाउंटेंट की दरकार है. अपना रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करो.
Here मुझे एक चीज बोलना है before I end, friends. Many people in the fraternity and in the industry at large feel कि जब आप हमसे 12 return 1 और फिर 12 3B फाइल करा रहे हो, 9 और 9C की क्या दरकार है? Well, I am of the viewpoint that 9C gives you that one opportunity जहां पर if at all आपसे कोई भी गलती हुई है, आप उसको make up कर सकते हैं. So you should treat your 9C very carefully, even if you're a chartered accountant who's preparing a 9C. Irrespective of the fact कि आपका signature उसमें नहीं जा रहा है, it is that one last opportunity you get to do everything in the right way. चाहे उसमें पेमेंट आप DRC 03 से करिए या कैसे भी, बिकॉज जब डिपार्टमेंट आएगा वो तो आपको बोलेगा इडीको करने. सो दिस इज वन एक्सरसाइज जो आपने पहले से अपनी बनाकर रख ली है. सो टू माई माइंड आई फाइंड इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, नॉट बिकॉज ऑफ अ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट इवन असेसी जो पूरे साल काम करते हैं उनका पूरा इकट्ठा करके जो चीजें आपकी सही मायने में होनी चाहिए, दैट डज नॉट मीन कि आप 1 और 3B थ्रू आउट द ईयर गलत करिए. वो तो अब स्कोप भी नहीं है. विद इतने इंटरलिंकिंग और 1 and 3B आपको तो प्रत्येक रिटर्न ठीक से करना है, बट एनुअल रिटर्न के थ्रू भी आप अपना कर पाएंगे. So I think with this, I would like to bring an end to today's discussion, unless if anyone has anything to add. Otherwise, I'll request the either Ayush or maybe Priyank to call for a closure for the session. Madam, one last question I want to ask. Yes, sir. Yes. Actually, see, there is a time limit of taking input and reversal of output. Now, I'm talking about purchase return. When there is a purchase return, we send back the goods through delivery challan and the supplier issues a credit note. Yes. Now, there is a particular limit, like it was September. Now even that's been extended to the 30th of November. Now, if after that the goods are returned, you cannot sell it through a delivery challan or a credit note. No, then that will be treated as a supply from your side, sir. You will have to charge GST under the cover of a tax invoice. Actually, I have advised this to my client. Am I correct or not? I just wanted to verify. Yes, sir. Because see, under the relevant section, they allow you to issue a credit note within the due date for filing the return for the month of September of the following financial year. Yeah. Now, in this case, they have again extended this time limit to the 30th of November, like they've done in many other cases. Okay. But beyond that, if you return the goods, then it will not be treated as a purchase return. Then the receiver will have to send the goods under the cover of a tax invoice, charge GST, against which the original supplier can take the ITC, and then it will be a revenue neutral case, because any which way the GST charged by the recipient will be available to the original supplier as an ITC. Absolutely. So that's Thank absolutely you, madam, for the confirmation. Most welcome, sir. Any other questions, guys? I don't think that there are any other questions. Yeah, so we'll call it quits. Before that, formal vote of thanks from Ayush and a token of appreciation, e-memento. Thank you so much. Pleasure was all mine. I would say the pleasure was, for the 60 participants who were listening to you. No, it's always a learning. Thank you, Shivani ji, Thank you, for the Ayush. enriching session today. It was really intriguing and interactive. We had a wonderful time listening to you, and we hope to welcome you in more GT discussions. Absolutely. Pleasure will be all the way mine. Thank you so much. Thank you everyone for tuning in. And I look forward to many such events in the future. All the best and a happy GST year ahead to each one of us. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ayush, we can I think we can close the session for today. Yeah. Thank you everyone for joining in. Thank you.